class 11th commerce, subject business studies, chapter number 4. The name of the chapter is business services. It is lecture number 7. Health insurance. We will discuss about this something about health insurance. Disability resulting from illness or accident may be peril होता है बेटे loss, may be peril to the family because it not only cuts off the income but also creates large medical expenses, and it is very correct. Here we are discussing about the health insurance. Because of any illness, because of any accident, there can be loss to the family. Even nowadays, it is not at all possible that only it is just very much possible that only father earns and the rest of the family members they remain dependent on him. If father gets any injury, father meets with any accident, then it is really a peril for the family. What will happen? There will be no income, no salary. Jobs are mostly private. If there is government job, then no trouble. But nowadays, mostly we people have private jobs. No salary will be there, and there will be definitely large medical expenses. Then what will happen? In that case, what is necessary? That there should be health insurance. And now see, any accident can make anyone, any person disabled. Health insurance gives safeguard against the perils of the life. Health insurance, it is a safeguard against such medical costs. When any person goes for medical claim, it is insurance policy. Then what happens? All the expenses they are borne by insurance companies. In India, presently, the health insurance exists primarily in the form of मेडिक्लेम पॉलिसी. इंडिया में जो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है इस टाइम मेडिक्लेम पॉलिसी में है. एंड not alone this mediclaim policy, there are so many companies who are doing these mediclaim policies. Not only LIC of India, there are many more companies who are giving very good options for health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज. देखिए क्या कवरेज आपको मिलता है. फर्स्ट नंबर इट इज मेडिकल एक्सपेंसेस. In that case, whatever are the medical expenses, those medical expenses are reimbursed. Many times it happens non cash policies होती हैं बेटा. Means आप हॉस्पिटल जाइए, whatever the service you require, get that service and come back. Point number 1, medical expenses. It covers the expenses of hospitalization, nursing home bill, and doctor's services. Means all medical expenses they are borne under the health insurance. There are so many insurance companies which gives very much good options regarding the insurance of health. Point number 2, disability income. आप कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं. कवरेज दे आर ऑफ टू टाइप्स. कवरेज नंबर 1 वी हैव डन. नाउ मूव ऑन टू कवरेज नंबर 2. It is disability income. It replaces the income lost while the insured is unable to work. And now listen, whenever any person because of any reason becomes unable to earn any type of income, in that case option number 2, the insurance claim can be got done. उसको आप करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है. There are the two types. Point number 1, medical expenses, and point number 2 for disability income. And now difference between life, fire and marine insurance. This is the difference that I am going to teach you now. See,
Basis of difference, point number 1 is subject matter. लाइफ इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ. देखिए, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है बेटे वो सामान जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं. तो अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए तो हम ही सब्जेक्ट मैटर हैं, हम ही सामान है. ए नंबर सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ. नाउ मूव ऑन टू फायर इंश्योरेंस. In fire insurance, the subject matter is any physical property or assets. कोई सा भी सामान, फिजिकल सामान हो, संपत्तियां हो, फायर के अगेंस्ट द इंश्योरेंस कैन बी डन. पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज नॉट पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड नंबर पर है मरीन इंश्योरेंस. इन मरीन इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर इज अ शिप, कार्गो और फ्रेट. शिप हो सकता है, सामान हो सकता है, और फ्रेट होता है बेटे किराया भाड़ा. whatever the amount is to be paid, that is free. सब्जेक्ट मैटर लाइफ इंश्योरेंस के लिए ह्यूमन लाइफ है, फायर इंश्योरेंस के लिए प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, मरीन इंश्योरेंस के लिए द सब्जेक्ट मैटर इज शिप, कार्गो और फ्रेट. पॉइंट नंबर 2, बी नंबर, इट इज एलिमेंट. लाइफ इंश्योरेंस हैज एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ. देखिए, एलिमेंट का मतलब है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं. When the matter is of life insurance, it has two elements. You are getting protection against any mishappening. If mishappening does not occur, then it is the investment. After the time of maturity, the amount of insurance company will be paid of the insurance premium. Whatever the premium is paid, that will be given to you back after the expiry of maturity period. Fire insurance has only the element of protection. And I tell you one thing, when, see, rather than life insurance, if fire insurance is done or marine insurance is done, that is done only for 1 year, and that gives you the protection, but it is not an investment. If for 2020 any type of fire insurance is done, एंड मान लीजिए हमने किया कि घर में आग ना लग जाए और घर में आग नहीं लगी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सी, दैट अमाउंट will not be given back to you. You cannot carry forward that amount. अगले साल में 2021 में आपको दोबारा से कराना पड़ेगा इंश्योरेंस. वो ना अमाउंट आपको मिलेगा ना टाइम कैलकुलेट होगा. फॉर 1 year इट इज डन ओनली. सेम थिंग इज विद इवन द मेडिक्लेम पॉलिसीज. लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेटा, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का बता रही हूँ. पॉइंट नंबर बी, एलिमेंट. Life insurance has elements of protection and investment both. Fire insurance has only the element of protection and not the element of investment. Amount cannot be carried forward. Marine insurance, it has only the element of protection. Now see, in life insurance, protection, investment. In fire and marine insurance, there is only protection. They are not at all the investment. Investment is only in life insurance, not in medical policy. ये भी ध्यान रखिएगा. C number, insurable interest. In life insurance, insurable interest must be present at the time of affecting the policy. In life insurance, insurable interest must be present at the time of affecting the policy, but need not to be present at the time when claim falls due. अभी देखिए, क्लेम फॉल्स ड्यू में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उस समय उस इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है. मान लीजिए मैंने अपना अपना इंश्योरेंस करवाया, माई इंश्योरेंस इज डन. Because of any reason, see, at the time of getting done the insurance I was present, but now I am died, I am no more in this world. In that case, the amount will be paid of insurance policy to my family dependents. इसीलिए ये लिखा है देखिए, but need not to be present at the time when the claim falls due. Claim can be fallen due because of maturity
or because of happening of any event. In fire insurance, insurable interest, and now listen, insurable interest on the subject matter must be present both at the time of affecting the policy as well as when the claim falls due. सी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है, दोबारा देखो बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट in fire insurance, insurable interest on the subject matter must be present both at the time of affecting the policy as well as when the claim falls due. यानी कि दोनों बार में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है. In life insurance, see, what was in life insurance, if you remember, need not to be necessary at the time when the claim falls due. At the time of getting claim, insurable interest का होना जरूरी नहीं है in life insurance, but in fire insurance that is necessary. That the see insurable interest must be present when the insurance is getting done and when the claim falls due. क्लेम कब फॉल होगा बेटे, जब घर में आग लग जाएगी, कोई जो जिस भी चीज का आपने फायर का इंश्योरेंस करवाया है, अगर फायर लग जाती है, इन दैट केस द क्लेम फॉल्स ड्यू. इन मरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली. इसमें एक बार में होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट. In marine insurance, insurable interest must be present at the time when claim falls due or at the time of loss only. Point number D. D number पर आइए बेटा, it is duration. In the not in the life insurance policy usually exceeds 1 year and is taken for longer periods ranging from 5 to 30 years or the whole life. देखिए ड्यूरेशन का मतलब होता है बेटा समय अवधि, कितना टाइम का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं लाइफ में. इट कैन बी फॉर एनी इयर्स, फॉर इवन द फॉर द होल लाइफ द लाइफ इंश्योरेंस कैन बी डन. बट व्हेन द मैटर इज ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डज नॉट एक्सीड 1 year. विद इन 1 year फॉल होना चाहिए आपका क्लेम, फॉल नहीं होगा, इन दैट केस इन दैट कंडीशन द अमाउंट विल नॉट बी पेड टू यू. Duration for life insurance policy, it can be for 1 year or for the longer period, 5 years, 20, 30 years, or for the whole life. But when the matter is of fire insurance, it should not exceed 1 year. कम मतलब 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा. Marine insurance policy is for 1 year or for the period of voyage or mixed. Mixed का मतलब है या तो साल भर लेके चलिए, या वोयज वोयज होता है समुद्री यात्रा, या फिर वोयज को लेकर के चलिए या दोनों को लेकर के चलिए. इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स. ई नंबर लॉस मेजरमेंट. लॉस इज नॉट मेजरेबल व्हेन इट इज द मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. हम अपने किसी भी इंसान की जिंदगी को कितनी कीमत लगाएंगे बेटे, वो तो बहुत कीमती है, पैसों से भी ज्यादा कीमती इंसानी जिंदगी है. तो इट इज रिटर्न फॉर लाइफ इंश्योरेंस. लॉस इज नॉट मेजरेबल इन लाइफ इंश्योरेंस. जिंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है बेटा, इसलिए लिखा है नॉट मेजरेबल. इन फायर इंश्योरेंस, घर में आग लगी, घर हमारा 2 करोड़ का था, 3 करोड़ का था, लाइक दिस मीन्स दैट लॉस इज मेजरेबल. इन फायर इंश्योरेंस लॉस इज मेजरेबल. इन मरीन इंश्योरेंस, सी लाइफ इन मरीन इंश्योरेंस लॉस इज मेजरेबल. इट इज मेजरेबल. हम उसको नाप सकते हैं भी, हमारा जो हमारा कार्गो है 50 लाख का था, 20 लाख का था, और वट एवर इज द मनी दैट कैन बी इजीली मेजर्ड. आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर है, एफ नंबर है बेटा, इनडेमनिटी. दोबारा देखिए, एंड दिस इज द वर्ड दैट फ्रीक्वेंटली इट इज कमिंग इन दिस चैप्टर. इनडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई. Life insurance is not based on the principle of indemnity.
See, only the when the matter is of life insurance, only the money can be paid. हम आपको इंसान मर गया उस इंसान के बदले इंसान नहीं दे सकते. इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती. So it is written, life insurance is not based on the principle of indemnity. The sum assured is paid either on the happening of certain event or at the time of maturity of the policy. पॉलिसी मैच्योर हो गई, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा ले लीजिए, कोई सर्टेन इवेंट हो गया, पैसा ले लीजिए. बट जिसकी डेथ हुई है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम को कोई ले नहीं सकता बेटा. सो इट इज द प्रिंसिपल देयर, द प्रिंसिपल ऑफ indemnity does not work. फायर इंश्योरेंस, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. भाई हमारी बाइक में आग लग गई, पैसा मिलेगा, परचेज अनदर बाइक, सेम बाइक लीजिए, हीरो होंडा, whatever you want to buy, any type of brand, you can. In fire insurance, it is the contract of indemnity. The insured can claim only the actual amount of loss from the insurer. Insurer are the uh, insurance companies बेटे, जो insurance करते हैं, these are the insurance companies. Insurer, the loss due to the fire is indemnified subject to the maximum limit of a policy amount. Whatever is the maximum limit of the policy amount, that amount can be claimed by the insured, and insurer will have to pay, but not more than actual amount. Marine insurance, again, it is the contract of indemnity. Insurance classy. Marine insurance, it is the contract of indemnity. The insured can claim the market value of the ship. मान लीजिए शिप को वही पे खराबी आ जाती है, then the market value of the ship that can be claimed, and cost of goods destroyed at the sea, and the loss that will be indemnified. The things whatever are insured, the amount will be paid. After that, surrender value और paid up value. पहले यहाँ समझिए what is the meaning of surrender value. मान लीजिए कि हमने 10 साल का बीमा करवाया बेटे, और see this is the amount. surrender value क्या चीज है देखिए, this is that amount which is paid by the insurance company before the date of maturity. That is surrender value. सरेंडर कर दिया किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने, के लिए चीज 10 साल का आपने इंश्योरेंस करवाया था, within 5 years we are paying you back. Surrender value or paid up value, I hope the meaning will be clear to you. See, life insurance policy surrender value or paid up value. Life insurance policy has a surrender value or paid up value. Fire insurance does not have any surrender value or paid up value. The same thing is with the marine insurance. Marine insurance does not have any surrender value or paid up value. Surrender value or paid up value, it is only with life insurance policy. Policy amount, H number. In life insurance, one can insure for any amount. In fire insurance, the amount of the policy cannot be more than the value of the subject matter. माने सामान बेटा, सामान, सामान की कीमत से ज्यादा का आप फायर इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. The same thing is in marine insurance. In marine insurance, the amount of the policy cannot exceed the market value of the ship or cargo. जो बाजारी कीमत है उतना आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं. I hope that you people are getting really. This is all very interesting, and these all many times these all talks even we keep on listening in family. I number, contingency of risk. In life insurance, there is an element of certainty. Certain क्या certain है बेटा, now see the event that is death or maturity of the policy. इनमें से कोई तो एक certain होगा. Is bound to happen, यानी कि वो उसको होना ही होना है. या तो मैच्योरिटी आएगी ही आएगी, और डेथ तो बेटा नहीं आनी. इफ द रीजन कैन बी एनी, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक जरूर होगा. इन लाइफ इंश्योरेंस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी. द इवेंट्स
क्या इवेंट होगा? दैट इज डेथ और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी इज बाउंड टू हैपन, उसने होना ही है. देयरफॉर द क्लेम विल बी प्रेजेंट. In fire insurance, the event that destruction by fire may not happen. हमने आग का बीमा करवाया, आग नहीं लगी. It can happen. पर जिंदगी का बीमा कराने के बाद हमारे ही नहीं जिंदा रह गए, ऐसा तो होगा नहीं बेटा. There is an element of uncertainty and there may be no claim. यहाँ पर देखिए फायर इंश्योरेंस में बिल्कुल एक एलिमेंट है अनसर्टेनिटी का. I thought that I should get my car insured for fire. In that particular year, the car was not caught by fire. In that case, in case of fire insurance, the element of uncertainty is present. And when the events are uncertain, then there will be no claim, there may be no claim. In marine insurance, the event that loss at sea may not occur, and then there will be no claim. There is an element of uncertainty in fire insurance and in marine insurance. And now listen to your homework. Chapter number 4, write and learn today's topics, whatever I have taught you. Those all are very interesting and very simple to understand. In case you have any doubt, you can call me. Phone numbers, my phone numbers are with you, beta. Thank you so much.